वेलकम टू वेल पेपर क्राफ्ट्स। और दिवाली की शॉपिंग हो गई? मेरी भी हो गई, पर मैं ना वॉल हैंगिंग लाना भूल गई थी। मम्मी ने जो लेक्चर दिए ना बाय गॉड, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें बना लिया एक प्यारी सी क्यूट सी एस्थेटिक सी वॉल हैंगिंग बना के। इफ यू आल्सो वांट टू मेक योर मॉम्स प्राउड एंड हैप्पी, यू कैन ट्राई इट विद मी। लेट्स गेट रोलिंग। सबसे पहले अमेज़न से आए कार्ड बॉक्सेस को कबाड़ से ढूंढ के लाओ और उसमें कुछ निशान लगाओ। अरे ये तो राइमिंग हो गया। वाह 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 वाह। मैं इस कार्डबोर्ड पीस में छोटी सी हार्ट एंड शुभ लाभ की आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी। कट करने से हमारी साइड्स थोड़ी रफ हो गई हैं, तो हम उसको मास्किंग टेप से सील कर देंगे। अब हम हमारी फेवरेट फेविकल क्ले से करेंगे मज़े। आइला जादू। मैं शुभ वाले कार्ड में गणेश जी का सेंटरपीस बनाऊंगी और लाभ वाले में सात्विक का। चलिए जल्दी से बनाते हैं हमारे प्यारे से सुंदर से क्यूट से गणेश जी। We will just tap down a circle for Ganesh Ji's tummy and then we will make legs और उसके बाद उनका क्यूट सा फेस। Then बिल्कुल छोटा छोटा सा क्ले पीस लेके we will make his ears, bowl, hands and मुकुट। Keep it aside to get dried and then we'll stick it later on our cardboard. तब तक हम हमारी वॉल हैंगिंग के लिए आउटलाइनिंग करेंगे विद आवर क्ले। हमको जहाँ जहाँ भी आउटलाइनिंग करनी है वहाँ हम फेविकॉल से लाइन ड्रॉ करके क्ले स्टिक कर देंगे। एंड देन आइला अगेन जादू। बोलो गणपति बप्पा मोरया। I really enjoyed making this video. If you also love making your own DIYs, then let me know in the comment section. When we are done with base, we'll quickly apply a layer of gesso to prime our surface. पूरे क्ले एरिया को कवर करके हम कार्डबोर्ड में भी जेसो का एक लेयर अप्लाई कर देंगे एंड देन उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम करेंगे मेरा मोस्ट फेवरेट काम, दैट इज पेंटिंग। आई विल स्टार्ट पेंटिंग आवर क्यूट गन्नू, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणपति बप्पा से होती है। गणेश जी को पेंट करने के लिए आई हैव चूजन ऑरेंज एंड पर्पल कलर कॉम्बिनेशन
And for base, I have taken teal blue and yellow. You can pick your own color combinations. Then मैं इसमें थोड़ी और डिटेलिंग दूंगी. I have made 3 beautiful flowers with base as white. हम बाकी भी हमारी आउटलाइन को वाइट पेंट कर लेंगे. Then I am adding a little shade of red in the flowers. एंड हाथ में भी वाइब्रेंट लुक देने के लिए हम लोग स्पॉन्ज की हेल्प से कलर कर देंगे सिर्फ साइड में. Build it slowly to give it a cool gradient effect and then paint its outline as white. अब हम करेंगे decoration. I am using pearl stickers here. If you don't have it, then figure not. Pick a round-tip object and make small dots with white color. It will give the same effect. Now we will decorate the borders with some mirrors. कितना कूल लग रहा है ना. पर अभी कहाँ, अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त. Make 6 tassels with whatever beads you have at your home. I have taken silver small beads, 1 big pearl bead and a bell to make mine. Stick it using fevicol and then secure it using masking tape. And it's ready. कितना प्यारा लग रहा है ना. I am totally in love with this. If you liked it, then you know what you have to do it, right? Like, share and subscribe. Bye bye.